Hello children, now we'll do the addition of those fractions. But see, can you see any differences? Yes, the denominators are not equal, है ना? Denominators same नहीं है. So while adding the fractions or while subtracting the fractions, the very first thing we have to do, सबसे पहले क्या करना होता है? We have to make the denominators equal. ओके सो उसकी अलग अलग क्या है पद्धति है, अलग अलग टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हैं. देन ओनली वी कैन ऐड देम और सब्ट्रैक्ट देम. सो वी विल सी द फर्स्ट सम 1/8 प्लस 3/4. ओके सो चिल्ड्रन, कैन यू सी any relation between these two numbers, the denominators 8 and 4? Yes, 8 is there in fourth table. 8 is there in fourth table. 4 to the 8. 4 to the 8. So we can make it 8. So we can make it 8. Okay. So we'll keep this fraction as it is because here already 8 is there. है ना? प्लस तो हमें इसको क्या करना है, चेंज करना है. 3/4 ऐसे ही लिख दिया. इसको 8 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. चिल्ड्रन, एंड देयर इज अ रूल, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर विथ एनी नंबर, सो विद द सेम नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर 2. ओके, तो उसको भी हमने 2 से ही मल्टीप्लाई करना है. ओके, देन 1/8 विल टेक एज इट इज प्लस 3 2 6, 4 2 8. Okay, now we have made them equal. Okay, so we will write like this: 1 plus 6, 1 plus 6 upon 8. So the answer will be 7/8. Now here we can't give any smaller form, so this is the answer. This is the answer. Let's go to the next sum. 2/21 plus 3/7. Yes, my children, can you see any relation? See any relation between these two numbers? The numbers at the denominators place. Yes, 7 की टेबल में 21 आता है. 7 3 21. 7 3 21. So to make it 21, we have to multiply this with 3. चलो, 2/21, because already 21 is there, we will not do anything with this. Okay, इसमें ही हमें चेंजेस करने हैं. Okay, so 7 3 21. So इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2/21 plus 3 3 9, 7 3 21. Okay, now children, we have got the equal denominators. Now we will add the numerators. We will add the numerators. 2 plus 9. 2 plus 9. 21 we will take as it is. 9 plus 2. How many? 11/21. 11/21. Now we cannot give them a smallest form, so we will keep like this only. Easy, children. Now see something different. Okay, what can you see in this sum? Yes, my children, 2/5 plus 1/3. Any relation? No. 5 और 3 एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे हैं, है ना? They are not divisible too. Okay, so at that time what we have to do? How can we make the denominators equal? By the cross multiplication. By the cross multiplication. Okay, इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है. 5 and 3 को, then 2 को 3 से, and 5 को 1 से. 5 को 1 से. Here this is called what? Cross multiplication. Okay, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर्स को. ओके, फर्स्ट वी विल डू दैट. 5 into 3. ओके, we have taken. Yes, then 2 into 3. We will write 2 into 3. Okay, the middle plus sign, how we can forget? Plus 2 into 3 plus 1 into 5. 1 into 5. Okay, this is called, children, cross multiplication. Again I am telling you the denominators we have to multiply. 5 into 3. Okay, then 2 into 3 plus 1 into 5. Okay, now we have to solve it. 2 3 6 plus 1 5 5 upon 5 3 15. Okay, now we got the denominator 15.
Next, 6 plus 5, that is 11 upon 15. So these are the odd numbers. We can't give them a smallest form. So this is the answer. Okay children, thank you.